Morning, morning, morning. So, what was the last point? Good morning. Good morning. We started right? Nahi? Okay. Criticism of GS Gore. Okay, okay, okay. Fine, fine. So, no problem. We will discuss. Please give heading a structural functionalism. A structural functionalism. Oh, function. Functionalism. Kinka? MN Srinivas, right? MN Srinivas. Srinivas. Yes. See, some basics. MN Srinivas adopted a structural functionalism to study Indian society, but his structural functionalism, he adopted a structural functionalism not from American sociologists like Talcott Parsons, but Radcliffe Brown, European sociologist Radcliffe Brown, right? We have not discussed about Radcliffe Brown in paper 1, isn't it? है ना? So basically, I will give a brief description and then we will move to MN Srinivas, right? See, Radcliffe Brown was a structural functionalist, but he differed, in his conceptual strand from other functionalists, right? Radcliffe Brown emphasized on how person-to-person relation is shaped by, determined by the structures of society, right? According to Brown, person-to-person relationship in society is institutionalized. Person-to-person relation in society is institutionalized. And how it is institutionalized? It is institutionalized on the basis of values and norms of society. Right? When we say values and norms of society, so as per values and norms, there are structures. As per values and norms, there are structures. Right? Like family, economy, polity. In all these structures, there are status and role. Yes, na? And persons, status, as per status, through their role, persons in society, members of society are related to each other. Yes or no? Person in society related to each other. As per their status, just a family, so husband and wife, in joint family system, there is some status of husband, there is some status of wife. And the status is defined by what? Defined by the family structure, its values and norms, isn't it? The members of family not only influenced by the set of guidelines, rather we also observe the norm. Yes or no? कि भाई ये norm है ना? Birth rights, birth के समय कुछ norms, death के समय कुछ norms. Yes or no? So those norms are followed by the members in society in different structures. समझना इसको, right? A status and role के through persons are interrelated to each other and this relationship is institutionalized. Person to person relation is institutionalized and such institutionalized, relation is functional for society. Such institutionalized relationship is functional for society. Got this point? ये point समझ में आया? कि जो इंटर रिलेशन होता है मेंबर्स का इन सोसाइटी दैट इज फंक्शनल फॉर सोसाइटी, दैट इज एज पर फंक्शनल नीड ऑफ सोसाइटी, राइट? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, स्ट्रक्चर्स है, राइट? स्ट्रक्चर डिफाइन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, इस पे कोई डाउट? स्टेटस बोले तो योर पोजीशन, राइट? जैसे
आपका पोजीशन डिफाइंड बाय कास्ट, प्राइमरी जो आपका आइडेंटिटी है, स्टेटस है, डिफाइंड बाय कास्ट, यस और नो? इंडियन सोसाइटी में yes, in Indian society it is defined by caste, defined by kinship, defined by religion, yes or no? And as per that status definition you act, yes na? You act and respond, आप act करते, आप respond करते, yes na? And you relate yourself with other persons, status of father, status of mother, status of son, daughter, yes or no? And all respond, act according to that status, isn't it? Actual behavior is called as norm. So normative pattern values relate the person to each other, isn't it? And persons are related as per functional need of society. In joint family, relationship had been different from that of nuclear family. आज जो relationship है nuclear families में, right, that is more egalitarian. Husband and wife के बीच में interaction is more egalitarian, right? Women in nuclear families have more freedom than joint families, more liberty to work in industries, factories than joint family as per the values and norms of nuclear family. Yes or no? As per values and norms of nuclear family in modern industrial societies. है ना? Such relationship is functional for today's society. Yes ना? आज अपन क्या देखते हैं? Divorce in case of incompatibility, right? Conflict between the personalities, divorce and सेपरेशन, इसको भी क्या मानेंगे? फंक्शनल, isn't it? क्योंकि एक ट्रबल्ड रिलेशन में रहने से क्या होता है? द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इन द फैक्ट्रीज, इन द कंपनीज, इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर अफेक्टेड, यस और नो? एंड सो डिवोर्स एंड सेपरेशन, ऐसा नहीं था ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिलीज में, क्योंकि वहां पे continuity in relation and collectivity orientation had been functional for the society, yes or no? Continuity of relation and collectivity orientation, isn't it? So उस तरीके का रिलेशन. अब such theoretical viewpoints were borrowed by MN Srinivas. MN Srinivas analyzed social relationship in Indian society. Person to person relation in Indian society is based on caste. उन्होंने propagate किया क्या कि the person to person relation in Indian society is institutionalized and primarily institutionalized on the basis of what? है ना? कास्ट. देखो मान लेना इस बात को, जो आप मेट्रोपॉलिटन अर्बन लोग हो, आप भी मान लेना इस बात को. देयर आर स्टडीज टू सब्सटेंशिएट. कुर्ग का स्टडी किया उन्होंने, है ना? राइट, रामपुर का स्टडी किया उन्होंने, राइट? एंड इन हिज स्टडी ही फाउंड कि पर्सन टू पर्सन, और स्टडी में क्या जाने की जरूरत है? डोंट यू थिंक कि पर्सन टू पर्सन रिलेशन, मैरिज, कास्ट एंडोगेमी प्रैक्टिस्ड येट और नॉट? आज भी युवक युवती मिलन समारोह ऑर्गेनाइज्ड बाय अग्रवाल महासभा, ब्राह्मण महासभा, यस ना? जाट महासभा में ऐसा नहीं देखा मैंने, लेकिन वहां भी है. लेकिन अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी सी सच. तो किस लिए? टू इंश्योर पर्सन टू पर्सन रिलेशन बेस्ड ऑन कास्ट. खाप पंचायत क्या करते? ट्रेडिशनल पंचायत, कास्ट पंचायत, disciplined their members, right, in caste occupations, right? Disciplined their members for endogamy, marriage within caste, isn't it? जो प्राइमरी रिलेशन आपका होता पर्सन टू पर्सन रिलेशन किनशिप सिस्टम में, यस ना? और किनशिप क्या कास्ट से बाहर होता? क्या किनशिप कास्ट से बाहर होता है? अरे किनशिप क्या बोलते हैं? पर्सन टू पर्सन ब्लड रिलेशन और एफिनल रिलेशन, राइट? उसको किनशिप रिलेशन बोलते है ना? किनशिप रिलेशन, नातेदारी जिसको कहते. तो नातेदारी किनशिप रिलेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट और नॉट? जब कास्ट एंडोगेमी का प्रैक्टिस है इंडियन सोसाइटी में, सो सर्टेनली किनशिप रिलेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कास्ट. उसके ऊपर तो वही है, कास्ट ही है, राइट? किससे क्लोज होना है, किससे सेपरेट होना है, डिफाइंड बाय कास्ट हायरार्कीज, राइट? यस और नो? The relation between the higher and more distance in relation, right? Close relation between Brahmins and Kshatriyas, yes or no? तो social relations में जो distance है, right, रहा है traditionally in Indian society, that also based on caste. तो इसी को कहते हैं person to person relation based on caste, isn't it? अब इस relationship को MN Srinivas studied from functionalist perspective.
This relationship, person to person relationship institutionalized in caste has been functional for society, has been functional for society. This has ensured, according to MN Srinivas, order and stability in society. इससे क्या रहा है? order and stability. Criticize भी करेंगे, लेकिन अभी criticism पे jump नहीं करना है. Last में we will criticize. This harmonic relation also had been there, but जब एमएन श्रीनिवास कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन रिलेशन बेस्ड ऑन कास्ट, तो यस वी हैव एविडेंसेस एंड एग्जांपल्स ऑफ जजमानी सिस्टम in different regions of India. Relationship between landholders caste and landless caste, right? Landholders caste and business caste, है ना? Landholders caste and service caste का means continued for centuries, आज भी कंटिन्यू हो रहा है, बस एक्सचेंज मोनेटरी हो गया, बट रिलेशनशिप तो आज भी है ना. बार्बर्स एंड अदर्स कास्ट, yes or no? Who are the barbers? Brahmins largely? Kshatriyas? Nahi. A particular caste? Yes or no? A particular caste, right? Religion change हो गया इंडिया में, but caste occupation continued, right? You will find large number of Muslims from Bijnor, you know, in this practice of, right? जैसा देहरादून में देखता हूँ, mostly Bijnor से लोग. तो that occupation continued. Religion, even after change in religion, the traditional occupations, you know, continued. That hair cutting and all continued, right? So this is caste defined occupation, and through occupations, you know, persons related to each other, right? Iron smith caste, right? Mostly, you know, jats in iron smelting. Are jats are iron smelters? No. Landholders, land tillers, farmers, isn't it? Particular caste, you know, practiced smelting of iron. Yes or no? Yes ना, जिनको iron smith caste बोलते. Yes or no? Right. देखो, mobility हर caste में हुआ, लेकिन ये एक reality है कि नहीं? And as far as mobility is concerned, तो in caste groups, individual have become mobile, not the caste at large. Right? From particular caste, individuals have changed their status in our society. या पूरे, like Ram Vilas Paswan ji became minister, the late Ram Vilas Paswan ji, Chirag Paswan ji became, क्या पूरा caste का mobility हो गया? Individual family in caste, isn't it? Getting your point. So this is, right? कि आज भी Indian society में एक reality क्या है? और अगर वो reality नहीं होता dominant, तो ये जो modern scientific internet technology है, why that technology would have submitted themselves to caste? brahmanshadi.com है ना, yadavshadi.com, yes or no? उसने भी submit किया कि नहीं अपने आप को? adopted to the caste or not? right? yes ना? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, यूरोपियंस कहते हैं कि यूरोप इज मॉडर्न, यूरोपियन इज मॉडर्न बिकॉज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लेकिन इंडिया में उनका टेक्नोलॉजी भी हमारे कास्ट के सामने नतमस्तक हो गया. राइट? यस और नो? राइट? है ना? उसमें कास्ट में आप देखते मॉडर्न ऑक्यूपेशन इंजीनियरिंग, उसमें जो कंडीशन रहता कि कास्ट यादव एंड उधर रहता इंजीनियर और एमबीबीएस, isn't it? yes or no? right? so this is, आज भी क्या है? majorly person to person relations. when it comes to social relation, please don't think about market relation. Market relation is something different. Market relation is something different, right? When it comes to social relation, caste is still the building block of Indian society. इसको आप मान लें. Caste is still building block of Indian society, right? Right? है ना? So this is, I had been very rebellious kind of person right from the childhood, because of some more मतलब observations and sensitivities, right? sympathies, right? so fake application लिख के मैंने अपना नाम चेंज करवा लिया क्लास 10th में, right?
मतलब एप्लीकेशन लेके फादर साहब का साइन कर दिया मैंने सेल्फ से, राइट? क्योंकि डिमांड करते कि नहीं चेंज करना है तो, है ना, सब कुछ। लेकिन फिर भी जब आया हायर स्टडीज में तो कास्ट सामने आ ही गया, कास्ट को समझना पड़ा, राइट? और जब समझा कास्ट को तो समझ में आया कि कास्ट की लीला तो अपरंपार है, राइट? राइट, गेटिंग अ पॉइंट? पूरा स्टेट क्रॉस करना पड़ा इंटरकास्ट मैरिज के लिए, राइट? कई स्टेट, राइट? क्योंकि लोकल, है ना, समझ रहे हो, है ना, हरियाणा में खाप्स भी होते, है ना, ओनर भी होता, राइट? एंड कभी कभी किलिंग्स भी हो जाता, राइट? राइट? तो व्हाट आई मीन टू से कि कास्ट को एक्सेप्ट कर लोगे अकॉर्डिंग टू एमएन श्रीनिवास, building block of Indian society, person to person relation is institutionalized based on caste, isn't it? The way Radcliffe Brown explained कि person to person relation is institutionalized by the structure, in a structure based on values and norms. Similarly, in Indian society too, person to person relation, right, is based on caste, isn't it? Primarily based on caste. When it comes to social relation, please don't mix it with economic relation. In fact, in Indian society, not only economic relation, political relation, cultural relation, isn't it? Right? All aspects of, relationships is determined by caste. You will see, if you will go for minute observations, right, you will find that there is culture of folk god and goddesses, folk deities, isn't it? Folk deities, right? So, folk deities basically are deities of caste, particular caste, range of lok devata, lok devis, right? Getting a point? गोविंद जी महाराज, है ना, मतलब वो कृष्ण वाले गोविंद जी नहीं है, कृष्णा को भी क्या बोलते हैं, गोविंद नहीं, गोविंद जी महाराज। अभी हमारे एक ड्राइवर हैं तो उनसे उन्होंने कहा कि गोविंद जी महाराज का पूजा है उसमें जाना है। मैं बोला कि कौन गोविंद जी, ये तो वृंदावन वाले। तो नहीं नहीं नहीं, हमारे गोविंद जी अलग हैं, मतलब वो सेपरेट पार्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स के महाराज, इजंट इट? सो एवरी एस्पेक्ट प्राइमरी क्या है, कास्ट, एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन कास्ट, इजंट इट? इंडिया में डोंट यू थिंक कि पॉलिटिकल सक्सेस ऑल्सो डिटरमाइंड बाई कास्ट? यस, अगर आपको लगता है कि नहीं, तो यू कैन सी एट पैन इंडिया लेवल डोमिनेंट कास्ट, द कास्ट ग्रुप्स, डोमिनेंट कास्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। डोमिनेंट कास्ट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया control the politics. Dravidians, Adi Dravidians dominant numerically, they control politics in Tamil Nadu, right? Reddys and Chaudhurys, Naidus control politics in Andhra Pradesh, right? Jats, right? The National Party dared to appoint a non-Jat chief minister, right? After winning election, and next election may could not reach to the majority mark in Haryana. Yes or no? Yes, na? And so they had to compromise with the staunch critic, जिन्होंने पूरे इलेक्शन में उनको क्रिटिसाइज किया, यहाँ तक बोला कि भाई हम हरियाणवी तो बॉर्डर पे जाके लड़ते, ये तो गुजराती लोग जाते भी नहीं लड़ने, यहाँ तक स्टेटमेंट दिया। उसके साथ भी अलाइनमेंट किया उन्होंने, राइट? बिकॉज दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी, राइट? गेटिंग ए पॉइंट, राइट? सो इन डिफरेंट रीजन्स विल सी the dominant caste, the caste with numerical strength, right? और भी features है, लेकिन एक important feature है numerical strength. They control the politics, and that's why political parties are forming equations to balance the numerical strengths, right? Forming equations, right? Getting a point. Nishad party and BJP equation, because in north eastern UP, Nishad's का numerical strength is high, right? They influence elections, isn't it? And so
son of Mallah in Bihar, isn't it? So numerical numbers का equation है, isn't it? So here also comes कि caste influence the politics. Getting your point? So basically, MN, according to MN Srinivas, like caste is building block of Indian society, which determines person to person relation. This is the broad. अभी और सी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक important concept है जिसने जो उन्होंने borrow किया किससे? Radcliffe Brown से, isn't it? Right. Please note. Radcliffe Brown. हाँ. हाँ. इमोशनल नहीं होंगे उस पर, फंक्शनल है. मान लो कि अगर हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग और डेली फाइट हो रहा है घर में, वायलेंस हो रहा है, तो विल दैट बी फंक्शनल फॉर सोसाइटी एट लार्ज? नहीं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं, सोशल पर्सपेक्टिव से भी. क्या वायलेंस सोशली एक्सेप्टेड है? इट इज बेटर टू सेपरेट देन लिव इन अ रिलेशनशिप विद वायलेंस. यस और नो? जहाँ पे आगे पढ़ाऊंगा, एस्केप गोटिंग ऑफ चिल्ड्रेन होता है. वेन एवर देर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वायलेंस इन द फैमिली, चिल्ड्रेन्स आर मेड एस्केप गोट, isn't it? And that scapegoating of children influence their personality. इसलिए divorce and separation, है ना? बलि का बकरा, scapegoating means, है ना? Parents fight and उसका manifestation किधर? Tension basically projected on whom? Children, right? और children's के personality, तो इसलिए separation is functional, isn't it? In that situation, right? Please note. A structural functionalism of MN Srinivas, a structural functionalism of MN Srinivas is based on a structural functionalist perspective, a structural functionalist perspective of Radcliffe Brown. Radcliffe Brown, full stop. Radcliffe Brown defined function, Radcliffe Brown defined function of any social institution, function of any social structure or institution in terms of its contribution, function of any social institution in terms of its contribution, in terms of its contribution to the maintenance of whole society, to the maintenance of whole society. Right, full stop. According to Brown, Radcliffe Brown, the relationship between members of society are organized in terms of a structural values and norms, organized in terms of structural values and norms, in terms of structural values and norms. Values provide general guidelines for behavior. Values provide general guidelines for behavior. Full stop. Right? Next paragraph. According to Radcliffe Brown, the social structure of society may be or can be seen as, social structure of society can be seen as the sum total of normative behavior, sum total of normative behavior, underline under bracket लिख लो normative behavior, the behavior as per status of individual in structures following the values
as per status of individual in structures following the values and norms, bracket closed, right? In other words, full stop. In other words, person to person social relation, in other words, person to person social relation is institutionalized as social structure in society, institutionalized as social structure in society, according to Radcliffe Brown. According to Radcliffe Brown. Right, full stop. Next paragraph. MN Srinivas, full stop. MN Srinivas. Next paragraph. Next paragraph. MN Srinivas borrowed such conceptual theoretical strands from Radcliffe Brown, such conceptual strand from Radcliffe Brown, and applied it to study social structure and relationship in Indian society. Right. Beginning from 1940s, beginning from 1940s, 1940s till 21st century, till end of 20th century, better say, till end of 20th century, a structural functionalist perspective, a structural functionalist perspective dominated Indian sociology, dominated Indian sociology, full stop. Right. एक सब हेडिंग दो, context of rise of structural functionalism in study of Indian society. Subheading, context of rise of structural functionalism in a study of Indian society. Right. Full stop. Right. This is subheading. Now, the context for application of structural functionalism, the context for application of structural functionalism was prepared by the context for application of structural functionalism was prepared नहीं context of क्या लिखा आपने, the context of for application of was emerged after structural functionalism emerged after independence full stop, after independence full stop, for reconstruction of Indian society. The independent state for reconstruction of Indian society, क्या लिखा आपने? For reconstruction of Indian society, the independent state of India, comma,
the planners and policy makers needed exact knowledge or appropriate knowledge of Indian social structures, appropriate knowledge of Indian social structure, its values and norms, in its values and norms, right? Full stop. Both the Indian sociologists as well as both the Indian sociologists as well as social anthropologists, both the Indian sociologists as well as social anthropologists conducted many studies, many field study को underline करना, conducted many field studies to understand the structures as well as their functions and change in a structure, as well as their functions and change in the structures. Right? MN Srinivas, along with SC Dubey, SC Dubey emerged as prominent figures in Indian sociology, who conducted many field studies following structural functionalism, right? Structural functionalism of Radcliffe Brown, right? Who conducted many studies following structural functionalism of Radcliffe Brown, and thus emerged a structural functionalist school. तो ये हो गया context, है ना? देखो, after independence, even government of India sponsored many studies, right? Many studies were sponsored by Ford Foundation. Ford company को अपना सामान बेचना था, तो many studies were sponsored by Ford Foundation to understand society and culture, right? Many industrial foundations, sponsored village studies, right? And these studies were mainly conducted, हमें तो केवल MN Srinivas को पढ़ना है यहाँ. There were many, other structural functionalists who conducted studies to understand the functions, the condition of structures and their functions in Indian society. Changes, कि what structural changes has taken place in last 150 years of British rule in Indian society. उसी context में MN Srinivas साहब ने propound किया the process of Sanskritization as well as Westernization. कि change occurred through the process of Westernization, isn't it? He talked about the functions of British rule, right? कि British rule had been functional in bringing institutional changes, ideological changes and technological changes in Indian society. ठीक है ना? So उस context में SC दुबे साहब को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया. SC दुबे स्टडीड Shamirpet village, and on the basis of his recommendations, his study report, government of India implemented community development program, जो CDP आया था 1952 में. इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे आप, है ना? गेटिंग योर पॉइंट? क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के लिए जरूरी क्या था? appropriate knowledge about society, yes or no? जो पॉलिसी मेकर्स थे, they needed appropriate knowledge about Indian society after independence, isn't it, to make policies. और उसके लिए कौन स्टडी करता है?
Sociologists and social anthropologists conducted many studies, and mostly sociologists and anthropologists followed perspective. किसका perspective? Structural functionalist perspective. Because Indology में क्या था? उसके पहले कौन सा व्यू पॉइंट पॉपुलर था? Indology. Indology in Indian sociology, G.S. Gure Sahab and many others were popular, but they did not conduct field study. Their viewpoints were based on books. Book view था, field view नहीं था. Isn't it? Right? So in that context, emerge structural functionalism. ठीक है ना? तो एक लाइन में जब आप आंसर लिखें तो एक लाइन में इस कॉन्टेक्स्ट को जरूर लिख दें. स्टूडेंट्स नहीं लिखते कॉन्टेक्स्ट, है ना? दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी. ठीक है. नाउ हेडिंग दो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ MN Srinivas. राइट. है ना? ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, MN Srinivas did structural and systematic study of Indian society based on the stratification pattern of caste, full stop. He combined empiricism under bracket field study, with theoretical analysis under bracket functionalism to study Indian society. He analyzed, इसी में कंटिन्यू करोगे, he analyzed Indian social structures, for example caste, from functionalist perspective based on field studies. Right? He did direct observation. Of the caste, its structure and relationship, functions and change. Caste, its structure and relationship, functions and change. Right? Functions and change. He did study Kurgs, COORGS, Kurgs of Mysore, MYSORE, Kurgs, COORGS, Kurgs. He did study of Kurgs of Mysore, right? To study Indian society. Kurgs, COORGS, Kurgs of Mysore, right? Next point. On the basis of his study, Srinivas propounded that caste is the building block
of Indian society. Caste is the building block of Indian society. Right? It is a significant, caste is the significant constituent of Indian social system. Caste is significant constituent of Indian social system. Person to person relation, significant constituent or component of Indian social system. Full stop. Person to person relationship in Indian society, person to person relationship in Indian society is and patterned, established and patterned in caste system. Established and patterned in caste system. Right? Full stop. Next point. He analyzed how different social cultural elements related to caste is functional for society, right? In his study of, he analyzed how different social cultural elements related to caste is functional for society. Continuity में लिखो. In his study of the Kurgs, and applied it on wider scale of Indian society. Applied it on wider scale of Indian society. He studied, इसी में continue करोगे. He studied the particular phenomena of caste. He studied particular social phenomena of caste, religion, culture, etc. in functional terms. Culture, caste, religion, culture, etc. in functional term, and related it to wider social context of Indian society. Wider social context of Indian society. Right? Next point. His aim was to study and understand how the particular institution under bracket caste shape and provide order and shape and provide order and stability in context of Indian society. Right. In context of Indian society. Right. He was interested not only in study of structural phenomena, but also
but also change in the caste system, but also change in the caste system, right? On the basis of his studies, on the basis of his studies, Srinivas propounded that, on the basis of his studies, Srinivas propounded that caste in India provided, caste in India provided not only a structural framework, a structural framework to define person to person, to define person to person social, economic, political, person to person social, economic, political, cultural relationship, but it also provided a framework for a structural and systematic framework. It also provided a structural and systematic framework for social change. Social change, right? It is not only provided, क्या लिखा आपने, समझो जरा इसको, caste not only provides a structural framework for understanding person to person social relation, economic relation, political relation, cultural relation. क्या जो rites and rituals होता है उसमें सभी कास्ट के लोग बुलाए जाते, जो भात शेयर करते, फूड शेयर करते, तो सभी से एक ही जैसा, अगर सबसे एक दिन, जैसे डेथ राइट्स में विल सी कि वन डे ऑल आर इनवाइटेड एंड नेक्स्ट डे ओनली द क्लोज कास्ट मेन, इज इट? देयर आर मेनी सच राइट्स एंड रिचुअल्स. सो cultural also relationship is shaped based on caste. As I said कि folk culture में different caste had their own deities, isn't it? है ना, सभी जाति के अपने अपने deities, isn't it? तो उसको कहते हैं cultural relation. But not only framework for understanding the structure and relationship, but also framework for social change, right? Based on, एक sentence लिखो इसमें और, based on his studies, हाँ अभी आगे वही बात कर रहा है. Based on his studies, he propounded the concept of Sanskritization. He propounded the concept of Sanskritization. Propounded the concept of Sanskritization. Right? Full stop. Through the process of Sanskritization, according to Srinivas, through the process of Sanskritization, caste groups in lower hierarchies change their position. Through the concept of Sanskritization, Srinivas explained that caste groups in lower hierarchies change their position within the framework of caste. Within the framework of caste. Right, next point. According to Srinivas, Indian society is made up of caste. Full stop. Caste has been functional structure and important part of collectivity. Caste has been functional, made up of caste, full stop. Caste has been functional structure, comma, important part of collectivity
और इंडियन कम्युनिटी, कलेक्टिविटी और इंडियन कम्युनिटी, कलेक्टिविटी और इंडियन कम्युनिटी, राइट। द कलेक्टिव कॉन्सियसनेस, द कलेक्टिव कॉन्सियसनेस, जो इंडिया का कलेक्टिव कॉन्सियसनेस है, क्या वो यूरोप के जैसा है? नहीं, यहां कलेक्टिव कॉन्सियसनेस किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, isn't it? And that consciousness integrates, isn't it? That also in framework of caste, persons are related to each other in jajmani, isn't it? Occupational relation, yes or no? Right, तो इंडिया का सिनेरियो डिफरेंट है, गेटिंग अवे फ्रॉम दैट ऑफ यूरोप। वहां पे मॉडर्निटी से कलेक्टिव कॉन्सियसनेस स्ट्रेंथन हुआ, यहां मॉडर्निटी के बाद भी कास्ट का कॉन्सियसनेस है या नहीं है? यस ना, इसको डिनाई नहीं कर सकते ना। तो इसी बात पे वो कहते हैं, क्या लिखा आपने? द कलेक्टिव कॉन्सियसनेस, collective consciousness emanates or emanates out of caste. Collective consciousness emanates out of caste, right? Caste is, इसी में caste is the basic functional unit. Caste is the basic functional unit according to MN Srinivas. Right. Next point. MN Srinivas challenged European Indological view of unchanging Indian society. European Indological view of unchanging Indian society. He argued that caste is not a static phenomena, rather dynamic phenomena. Caste is not a static phenomena, rather dynamic phenomena. Change in caste system, can be observed within the social cultural framework, of caste, full stop. Through the process of sanskritization, अभी आगे डिस्कस करेंगे, through the process of sanskritization, comma, westernization, right, movement of persons from one place to another, as well as royal decrees or declaration, royalty, royal decrees or declarations, caste groups changed their relative position, within the structure of caste, और आज के सोसाइटी में तो और सारे फैक्टर्स आ गए, है ना। ये एमएन श्रीनिवास साहब तो 1950-60s की बात कर रहे हैं, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी, यस ना, सोशल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यस ना, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, यस ना, चेंज
has taken place in Indian society or not? चेंज हुआ है ना, बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. चेंज से जाति नहीं जाती, राइट? यस और नो? Caste has continued despite change because caste is the building block of Indian society, right? हर एक सोसाइटी का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना? एथनिसिटी एंड रेस, अमेरिकन यूरोपियन सोसाइटीज. सो कास्ट इन इंडियन सोसाइटी. अगर कास्ट वुड हैव बीन इनहिबिटिव फैक्टर, रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर, सो डू यू थिंक देयर वुड हैव बीन चेंज? अभी मैं एमएन श्रीनिवास के तौर पे बोल रहा हूँ, इसलिए माइनूट लेवल, माइक्रो लेवल पे मत ले जाना मुझे. MN Srinivas के अकॉर्डिंग कि if caste would have been a rigid, close, unchanging, timeless structure, so change would not have been possible. Yes or no? In Indian society? But ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना? Change is possible, isn't it? Right? Over the years, MN Srinivas साहब कहते हैं कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, वो रॉयल डिक्रीज की भी चर्चा करते हैं कि एंशिएंट टाइम में जैसे कायस्था कास्ट, Kayastha caste through royal decree during Mughal period, yes, ascribed higher status, right? Because they used to manage kya? Accounts of the Mughals, accounts. Post-independence also, large number of Srivastava ji you will find in banking system, है ना? Mathematics, knowledge banking system में, right? Audit में, banking system में. तो royal decrees के through higher स्टेटस, क्षत्रिय के इक्विवेलेंट स्टेटस दे दिया उन्होंने, राइट? ब्राह्मण्स वर नॉट रेडी. इसीलिए ब्राह्मण्स एंड कायस्था में अभी भी स्ट्रेस टेंशन रहता है. कायस्था मोर क्लोज टू ठाकुर्स इन हायर स्ट्रेटम देन द ब्राह्मण्स, राइट? क्योंकि वो रॉयल डेक्री से हायर कास्ट में आ गए, राइट? अर्लियर अदरवाइज हु हैड कंट्रोल ओवर स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर्स में पढ़ के बताते कि किस कास्ट का क्या स्टेटस है? ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स को था ना ट्रेडिशनली स्क्रिप्चर के बेसिस पे डिफाइनिंग द स्टेटस ऑफ कास्ट, इजंट इट? गेटिंग अ पॉइंट? तो सोशल मोबिलिटी, चेंज इन स्टेटस ऑफ कायस्थाज, इजंट इट? रॉयल डेक्रीज से. अदरवाइज मूवमेंट ऑफ पर्सन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पिलग्रिमेज एंड ऑल. ट्रेडिशनल सोसाइटी में भी था पिलग्रिमेज, पीपल यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड इन टुडेज सोसाइटी all the factors, modernization in education, spread of education, isn't it? Science and technological education, isn't it? Positive discrimination, sponsored mobility, positive discrimination, right? Policy reservation policies, isn't it? And transport and communication facilities, isn't it? Urbanization, industrialization, all these factors has led to change in Indian society within the framework of caste. Yes, na? Within the framework of caste. IITs, है ना? वर वधु चाहिए जो रहता है तो उसमें IITs वर, isn't it? एक IIT वधु के लिए, यस ना? ऐसा लिख के आता ना ऐड संडे को, हाँ ये से आता क्लासिफाइड. अरे पूरा पेज, दो पेज. अब सीजन आ गया है, अब आ गया. राइट? यस यस. नवंबर ऑनवर्ड क्लासिफाइड में यू विल फाइंड एडवर्टीजमेंट्स. यस यस. अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी नहीं देखने की जरूरत है. राइट राइट. सो दिस इज ऐसा है, राइट? तो हाँ, अभी आगे डिस्कस करते हैं. आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? सो गॉट दिस पॉइंट, मतलब उनके अकॉर्डिंग चेंज, ठीक है ना? ठीक है, बस ये बेसिक. हाँ हाँ है ना, डिफरेंस है. ब्राउन सैंड उसको बाद में करते हैं, राइट? क्लियर? यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं है. बाय द वे इनका क्वेश्चन है कि ब्राउन का व्यू ऑर्गेनिक से कैसे डिफरेंट है एनालॉजी से. तो ऑर्गेनिक एनालॉजी में हमेशा याद रखो कि जो ऑर्गेनिक एनालॉजी वाले लोग थे वो क्या बोले कि फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना? उनका बायसनेस किधर था? फंक्शंस के ऊपर. उनका बायसनेस फंक्शंस की, द वे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फंक्शनल एंड फंक्शनली यूनाइटेड, सिमिलरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी इज फंक्शनल. उनका फोकस किस बात पे था? फंक्शन. इसका फोकस किस बात पे है? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर, इट्स वैल्यूज,
डिफाइन पर्सन टू पर्सन रिलेशन विच इज फंक्शनल। तो यही डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है आर के मर्टन एंड हार्बर्ट स्पेंसर एमाइल दर्खे में, वही डिफरेंस है इसमें भी, ठीक है। ओके, सो दिस इज नाउ नेक्स्ट हेडिंग दो, संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन, यस, हाँ, ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम, लिमिटेशन है, लिमिटेशन भी तो बात करना है ना हमें लास्ट में, है ना। लेकिन जो कह रहा है वो सही है कि नहीं, कास्ट इज द फीचर और नॉट। In fact, tribes also have been influenced by caste. Religion change हो गया, but caste continued in Muslim religion, isn't it? There are processes, called Kshatriyization of caste. Tribes, many tribes, Tharu tribes adopted to caste Hindus ways and methods in UP, Nepal border, and they claim themselves to be Kshatriya. They be and behave like Kshatriyas. तो वहां भी कास्ट है, ट्राइब्स में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कास्ट नहीं है? कास्ट लाइक फीचर्स है कि नहीं ट्राइब्स में, राइट? संस्कृताइजेशन के प्रोसेस से डॉरी सिस्टम है कि नहीं मीना कम्युनिटी में, है ना? डॉरी, डॉरी तो फैक्टर रहा है किसमें, कास्ट में। मेनी सच कल्चरल ट्रेट्स हैव बीन एडॉप्टेड बाय ट्राइब्स टू। ऑल ट्राइब्स के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ट्राइब्स में नहीं है। गेटिंग योर पॉइंट और नॉट? क्योंकि इंडियन सोसाइटी इज हाईली डाइवर्सिफाइड एंड सोशल रियलिटीज इनफाइनाइट एंड कॉम्प्लेक्स, ऐसा तो मैक्स वेबर कह के चले गए। सो उनके व्यू पॉइंट से वी विल क्रिटिसाइज ऑल्सो, है ना? ओके, संस्कृताइजेशन, यस। अब यहां पे आते हैं जो आपने कहा कुर्ग्स, है ना? सो ही स्टडीड कुर्ग्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी of Kurgs, he propounded the concept of Sanskritization to explain dynamism in caste system, right? Dynamism in caste system, right? This process of Sanskritization, concept of Sanskritization is propounded on the basis of his field study of Kurgs in Mysore, right? Yes. First, last में, doubts last में, please, class finish नहीं होगा. Next, first concept, what is Sanskritization? What is Sanskritization? Right? What is Sanskritization? इसको इंफॉर्मेशन के तौर पे लो फर्स्ट। मैंने फर्स्ट डे भी कहा था कि एक नई बात होगी, नई चीज़ें होंगी जो आपके विजिबिलिटी में नहीं होंगी, उसको हम इंफॉर्मेशन के तौर पे लेंगे, उसको प्रोसेस करके कॉन्सेप्ट बनाएंगे, है ना? ओके, व्हाट इज संस्कृताइजेशन? फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया कि he propounded the concept of Sanskritization किस लिए? To explain dynamism in caste system and to refute, reject European notion of Indian society as closed society. Indian notion of Indian society as closed society. उन्होंने कहा कि यूरोपियंस को क्या राइट है ऐसा बोलने का कि इंडियन सोसाइटी इज क्लोज सोसाइटी, बाय अप्लाइंग देयर क्लास पर्सपेक्टिव। उनको अपना क्लास पर्सपेक्टिव अप्लाई करके क्या राइट है टू क्लेम दैट इंडियन सोसाइटी इज क्लोज सोसाइटी? भाई क्लास पर्सपेक्टिव इज रिलेवेंट इन योर सोसाइटी, है ना? इंडिया में लोग कास्ट में ही खुश है। सो कास्ट फ्रेमवर्क इज रिलेवेंट इन इंडियन सोसाइटी। इंडिया में कास्ट, सो विद इन कास्ट देयर हैज बीन प्रोसेस ऑफ चेंज, है ना? जाटव्स इमिटेटेड द लाइफ स्टाइल ऑफ जाट्स इन वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूपी, Western UP, and imitating the lifestyle and culture, they claimed higher position. Isn't it? Higher position. आज देखिए कि जाटोव्स एंड जाट्स में हमेशा कंपटीशन रहता है, राइट? सोशल स्फीयर्स में हायर, इकोनॉमिकली वेल ऑफ, एजुकेशनली वेल ऑफ, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, isn't it? सो ज्यादा कंपटीशन कास्ट को
जैसे आप 5 अटेम्प्ट देते हैं, उसी तरह कास्ट हर 5 इयर्स में कंपटीशन में आता है जब इलेक्शन होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल, इजंट इट? सो जब भी इलेक्शन होता, यू विल सी मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट। 24 के लिए कल मायावती जी ने नारा दे दिया कि सबको एक साथ आना होगा, यस ना? गेटिंग योर पॉइंट? लालू प्रसाद यादव जी ने भी नारा दे दिया, इजंट इट? राइट, कास्ट इक्वेशन की बात हो रही है अब केवल एक कास्ट से नहीं, क्योंकि दूसरे वाले ने भी अपने पार्टी के अंदर बहुत सारा मोर्चा बना दिया है ना। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, दोज पार्टीज हु अर्लियर अवॉइडेड रिलेटिंग देमसेल्फ टू द कास्ट पॉलिटिक्स एंड डिड पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी, वन डिड पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज तक भी दौर लगा रहे हैं, है ना, विदाउट एनी विजिबिलिटी ऑफ फ्यूचर एंड फेट, राइट? they failed to adopt, this party has failed to adopt the realities. दूसरा पार्टी ने देखा कि अरे ये रीजनल पार्टीज तो कास्ट को ऑर्गेनाइज करके इक्वेशन बना के, सो क्यों ना अपने पार्टी के अंदर ही हम बना दें ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, जनजातीय मोर्चा, है ना, वुमेन मोर्चा, राइट, ईबीसी मोर्चा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट मोर्चाज। तो एज पर स्टेट रियलिटीज, the party in government today has organized his political party into different caste morchas, right, and has facilitated the intermediary caste and the caste groups in lower stratum lead the political fronts in different states. Yes or no? Yes or no? है ना? Equations with the caste based political parties, equations with the caste based political parties, निषाद पार्टी के साथ इक्वेशन, isn't it? There are many such caste based political. तो रियलिटी को समझे कि भाई इंडिया में ये कास्ट से ऊपर जब तक इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पैक्ट, कांग्रेस रूल्ड। वो क्या था? वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाज क्रिएटेड बाय गांधी and Nehru and many other leaders, that consciousness, mobilized the people in favor of Congress. And you see, 70s, 80s onward, Congress has started losing its ground and yet has not gained the ground, because uske baad many regional political parties emerged in different regions of India on caste line. Yes, na? Caste equation, late 1980s में मुलायम सिंह यादव जी and कांसी राम जी. Yes, na? Late Sri Mulayam Singh Yadav ji and Kansi Ram ji came together and they challenged Congress. Congress की authority को खत्म. Getting a point or not? Right? तो कांग्रेस उसके बाद आज तक रिवाइव नहीं हो पाई यूपी में, because कांग्रेस could not adopt to this structure of caste. उनकी आइडियोलॉजी फिट नहीं होती, आइडियोलॉजी फिट नहीं होती, right? Secularism and all, right? They keep championing. तो और फिट वहीं पे दिखता है, क्योंकि पीएमशिप का रास्ता तो इधर से ही है, लखनऊ एक्सप्रेसवे से आता है ना, बिहार इधर होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे से आता है, राइट? उधर महाराष्ट्र में शिंदे एंड, राइट, ब्रेकडाउन इन कॉन्शियसनेस, जो यूनिटी था, राइट, उसको ब्रेकडाउन, इजंट इट? गेटिंग योर पॉइंट? सो दिस इज, सो मतलब पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं कि कास्ट is the, yes, building block. Caste is the building block. और वो you can see every 5 years before election, isn't it? The formation of equations based on caste, जिसको आज कहते हैं हम caste arithmetic and caste mathematics. आगे डिस्कस करेंगे कास्ट में. Caste arithmetic and caste mathematics, right? आंद्रे बेते ने कहा कास्ट केमिस्ट्री. अलग अलग थिंकर्स ने इस प्रोसेस को, कि पॉलिटिक्स में अभी भी इंडिया में ये सब चल रहा है, ये रेलेवेंट है ना? बट ये सब के बावजूद डोंट यू थिंक कि चेंज हैज टेकन प्लेस? यस और नो? अगर ये कास्ट अरिथमेटिक एंड कास्ट इक्वेशन एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ ऑन कास्ट लाइन, दैट itself shows change in caste, right? कि the caste groups who earlier did not had participation in mainstream politics, now those groups are mobilized into politics and getting respectful position in the politics, right?
सो दिस इज, सो कास्ट के फ्रेमवर्क में ही इंडिया में चेंज हुआ है। इतना मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग सभी पोस्ट एलपीजी चिल्ड्रन हैं, एंड मैं तो प्री एलपीजी में ही रोमांटिक था कि कास्ट कुछ नहीं होता है ना, अपने नाम से सरनेम हटा दिया कास्ट का, राइट। तो आप तो पोस्ट एलपीजी हैं, लेकिन कास्ट है ना, जाति कभी नहीं जाती, राइट। यस यस, ओके ओके। जो कभी आप में से किसी ने ये जो सत्यनारायण भगवान का कथा होता, किसी ने पार्टिसिपेट किया, तो उधर पंडित जी क्या पूछते, गोत्र, कास्ट वो जानते, गोत्र में कंफ्यूजन होता तो आपसे पूछ लेते। तो इंडिया में वर्शिपिंग सिस्टम में भी कास्ट है कि नहीं, यस और नो? वर्शिपिंग में भी कास्ट, इजंट इट? हिंदू कल्चर में रिलीजियस वर्शिपिंग में भी कास्ट एंड गोत्रा इज रेलेवेंट, है ना। गोत्रा जब तक बताओगे नहीं आगे मंत्रोच्चारण होगा नहीं, रुक जाएंगे वो वहीं पे, है ना। गेटिंग ए पॉइंट और नॉट, राइट? सो दिस इज कास्ट किधर नहीं है, कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट रिलीजन, कास्ट कल्चर, राइट, राइट्स एंड रिचुअल्स जो भी होता, फेस्टिविटीज होता, तो उसमें कास्ट में प्रोमिनेंटली पार्टिसिपेट्स, यस और नो? द किनशिप ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑफ कास्ट ग्रुप्स, सो दे पार्टिसिपेट, isn't it? Occupations में you will clearly see, I will give you one study also, recent study, right? The report of, report published, हालांकि पुराना हो गया, बहुत wider report था वो, published in some newspaper, The Hindu नहीं publish किया था, I guess. Title Hegemony of Caste on Indian Business. Hegemony of Caste on Indian Business. एक बार startups को देख लो. Mostly we'll find the successful startup Ola, Agrawal, Shadi.com, Bansal, isn't it? So there is clear, right? There is clear. You will see most of the CEOs, isn't it, from particular caste groups, isn't it? कुछ caste groups से. And that's why Dalit had to set up their own venture funds. Dalit Venture Fund, Dalit Chamber of Commerce, isn't it? Right, to facilitate themselves, in attaining economic mobility, because there had been hegemony. Hegemony, you understand? पहले भी चर्चा किया है, आगे आएगा hegemony. अल्थुजर का concept है ideological hegemony, isn't it, of the capitalist class in European society, जिसको कहता है ideological state apparatus and repressive state apparatus. मैंने शायद डिस्कस भी किया था कभी, है ना। तो such hegemony is visible in Indian business, right? Business organization, caste का hegemony, right? Caste का hegemony. So this is right. So यहाँ point ये है, फिर वहीं पे अपन आ रहे हैं कि caste is building block. बाकी जो social sphere में है marriage and all, उसमें तो आप देख ही रहे, owner killing का cases in case of deviation from caste norms in marriage. Right? So that is what MN Srinivas suggests, कि we cannot understand Indian society at large without taking into account the caste as the building block of Indian society. Caste as the core social unit, the basic social unit, defining social relation. Right? Okay, now coming back to, but ठीक है, इन सब के बावजूद स्ट्रक्चरल तो हमारा कास्ट का है, बट चेंज हैज टेकन प्लेस. अब उस चेंज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, राइट? यस, ओके. Sanskritization, please note, Sanskritization is a process. Sanskritization is a process by which, जो उनका टर्म है वही अपन यूज करेंगे, बाद में क्रिटिसिज्म भी होगा इनका, लेकिन यूज करेंगे उसको, है ना. By which, under inverted comma, low caste Hindus or low Hindu caste or tribals or other groups change their customs, comma, their ideologies, rituals and way of life in the direction of
of a higher caste, particularly twice born, in direction of higher caste, particularly the twice born caste. Twice born caste एक ग्रुप, एक कॉन्सेप्ट है किसका? द्विज का, है ना? द्विज, द्विज कास्ट जिसको बोलते हैं, ट्वाइस बॉर्न कास्ट. द कास्ट ग्रुप्स, अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करते द्विज कास्ट का? द कास्ट ग्रुप्स हु हैव सोशल कल्चरल राइट टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट दैट इज कॉल्ड ना, जनेऊ, उसका एक फेनोमेना है, उपनयन संस्कारा. द प्रोसेस ऑफ उपनयन संस्कारा, जनेऊ, sacred thread, wearing of sacred thread, right? The caste groups who have social cultural permission in Indian society to wear, sacred thread, those castes are referred as Dvij caste, isn't it? है ना? There are certain norms related to sacred thread, yes or no? Right? Chanting of mantras on daily basis, for the sacred thread, yes na? So this is, so particularly the Dvij caste or twice born caste, है ना? Under inverted comma लिखना है ना? Full stop, बस ये हो गया. क्या है संस्कृताइजेशन? Sanskritization is a process, according to MN Srinivas, by which low caste Hindus or the tribals or other groups, by imitating, change their status by imitating the customs, the ideologies, right, the wage methods of immediate higher caste, particularly the twice born caste, isn't it? Right. Next point, next paragraph. According to Srinivas, अच्छा ये तो लिख लियो ना, एक मिनट, एक सेंटेंस लिख लो. He propounded this concept on the basis of study. He propounded this concept on the basis of his studies of Kurgs of Mysore. Kurgs of Mysore. In his study of Kurgs of Mysore. Full stop. In his study, he found that the caste groups raised their status or improved their status. Caste groups in lower stratum raised their status or changed their status. Caste groups in lower stratum changed their status in the local hierarchy by adopting, in the local caste hierarchy, change their status in the local caste hierarchy by adopting Brahmanical customs, Brahmanical customs, ideologies, values, norms, ways and methods, etc., and given up, छोड़ देना, given up their own culture, and traditions. Full stop. They gave up meat eating, under bracket, non-vegetarian food. They gave up. Who gave up? Yes, they gave up meat eating, under bracket, non-vegetarian food, alcohol consumption, gave up alcohol consumption, animal sacrifice, etc., and imitated Brahmanical, imitated
imitated Brahminical culture, comma, food habits, under bracket vegetarian food habits, dress code, lifestyle, etc. By doing so, they claimed, who claimed? By doing so, they claimed higher social status or higher position, higher social status or higher position in the local caste hierarchy. Right? By doing so, they expected that, the higher caste would accept them, as equal and treat them with honor and dignity. Higher caste would accept them as equals and treat them with honor and dignity. Right? Higher caste would accept them as equals and treat them with honor and dignity. Got this point? अब ये है, इस प्रोसेस से क्या होता है अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास? चेंज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, है ना? चेंज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, राइट? एक चीज और जान लो, कभी आ गया यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में ब्राह्मणाइजेशन, तो प्लीज लिसन, इन द बिगिनिंग MN Srinivas referred this process as Brahmanization, but जब criticism हुआ कि भाई this is caste glorifying, caste का culture, तो उन्होंने इसको change कर दिया Sanskritization. Concept वही है Brahmanization, isn't it? Which later on reintroduced by Srinivas as Sanskritization, which is more neutral than Brahmanization, isn't it? Brahmanization तो caste sensitive है ना, so this is more neutral. So yes, हाँ, तो that is, this is the, वही अब आगे बताने वाला हूं कि इसमें क्या इन्वॉल्व है. He basically applied the concept of reference group behavior borrowed from R.K. Merton to propound his theory of reference, theory of this concept of Sanskritization, isn't it? कि caste groups in hierarchy, in lower hierarchy, imitated the caste of higher, isn't it? वही लास्ट में डेफिनेशन वही है ना, immediate higher caste, particularly twice born caste, isn't it? आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे अपन, डोमिनेंट कास्ट का, है ना? रामपुर के स्टडी पे ही propounded डोमिनेंट कास्ट. तो बेसिकली डोमिनेंट कास्ट एट पैन इंडिया लेवल, ये तो स्टडी किसका था? कुर्ग्स का, संस्कृताइजेशन. बाद में उन्होंने स्टडी करके एक और कॉन्सेप्ट propound किया और बोला कि डोमिनेंट कास्ट एट पैन इंडिया लेवल एक्ट एज रेफरेंस ग्रुप फॉर अदर कास्ट ग्रुप्स. डोमिनेंट कास्ट, उसके कुछ फीचर्स इन्होंने बताए हैं, है ना, जिसमें न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वगैरह, जैसे जाट्स डोमिनेंट कास्ट, रेडीज डोमिनेंट कास्ट. सो रेडीज इमिटेटेड बाय ऑल अदर कास्ट ग्रुप्स इन लोकल हायरार्की, जाट्स इमिटेटेड बाय ऑल अदर कास्ट ग्रुप्स इन लोकल हायरार्की फॉर चेंजिंग, है ना? हर जगह ब्राह्मण्स नहीं, जैसे जाटव्स डिड नॉट इमिटेट टू ब्राह्मण्स, रादर दे इमिटेटेड टू जाट्स इन मैटर्स ऑफ ड्रेस कोड, लाइफ स्टाइल, कल्चर, एजुकेशन के लिए, isn't it? Right? 1970s में आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, जाट्स बिकेम हाईली ओरिएंटेड टुवर्ड्स एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि इनकम आया, पैसा आया. सो दैट वाज इमिटेटेड बाय जाटव्स also, because jatovs were also enriched by business, particularly business of alcohol production and distributions, isn't it? Business of, these restaurants, I mean, जिसमें Brahmins and other caste deal नहीं करते थे because of notions of purity and pollution in the beginning. तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ? ब्रिटिश पीरियड में सब एक्साइज मैनेजमेंट में आ गया, रेगुलेशन, सप्लाई, अल्कोहल का ब्लेंडिंग एंड ऑल. सो हायर कास्ट कंसिडर दैट एज polluting,
So they did not venture into business, and the caste groups who ventured, they were benefited. जैसे जायसवाल्स in कानपुर region, पोंटी चड्ढा के पहले who dominated the alcohol business in UP? जायसवाल्स, right? वो तो बाद में पोंटी चड्ढा साहब गए और पूरा मोनोपोली कर लिया. Otherwise, जायसवाल्स, isn't it? Right? Yes. Okay. Next लिखो. हाँ. हाँ. Caste within the framework of caste. Yes. Ha. Yes. Next is nature and scope of Sanskritization. Nature and scope of Sanskritization. Nature and scope of Sanskritization. Right. सब criticism करेंगे, है ना? But after description, है ना? किसमें क्या पार्ट है? ना जनेऊ वाला पार्ट केवल एक पार्ट है. जनेऊ वाला पार्ट यहाँ पे आपने लिखा ना, फूड, ड्रेस, लाइफ स्टाइल, है ना, वाइडर एस्पेक्ट में बहुत स्कोप. ये तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, एजुकेशन एंड ऑल सभी आ जाता है. राइट? यस. नेक्स्ट लाइन. हाँ, सब ऑक्यूपेशन भी चेंज होगा. वाइडर, उन्होंने ये टर्म्स यूज किए हैं वाइडर लेवल पे, तो एजुकेशन, ऑक्यूपेशन सभी. राइट? यस, प्लीज नोट. नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचिंग दिस थिंग्स, थोड़ा सा, क्योंकि एनीवेज बार बार मैं कह रहा हूं ना कि पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू मान लेते हैं, है ना, उसके बाद क्रिटिसिज्म भी करेंगे. जितना यदि यहाँ क्लास में करेंगे ही करेंगे, बाहर जाके भी जितना करना होगा. लेकिन चूंकि सिलेबस में है एमएन श्रीनिवास, तो पहले पढ़ लेते हैं अपन, है ना. यहाँ पे फंक्शन ऑफ कास्ट क्या हुआ? फंक्शन ऑफ कास्ट क्या हुआ कि इट प्रोवाइडेड स्कोप फॉर सोशल मोबिलिटी एंड चेंज. हायर कास्ट ग्रुप्स विद देयर डिफाइंड कल्चर provided reference group to the caste groups in lower hierarchy according to MN Srinivas. So there has been inbuilt system of social mobility and change in caste framework. So caste has been a functional unit which provided people, motivated people in lower hierarchies to change their position. Isn't it? ये point है, मतलब यहाँ पे concept है ना? Yes. Next line, last में. Nature and scope. In the beginning, the process of Sanskritization, the process of Sanskritization has been slow. Right? As social economic, cultural interaction and transformation fastened during British period as social, क्या लिखा आपने? As social, economic, cultural interaction and transformation fastened during British period, the process of Sanskritization became more visible in Indian society. Right? During British period, westernization, आगे समझेंगे westernization क्या होता है. Westernization is a process of change, right? Which during British period, technological westernization, जैसे telephone, telegram, post offices were set up, railways, technological, institutional westernization, modern education, right? Modern occupations, alcohol blending, isn't it? Bureaucracy, right? Many modern occupation emerged. Army, yes na? Army, right? Many modern occupations emerged during British period. So that is process of Sanskritization. क्या लिखा आपने?
westernization fastened or provided a stimulus to the process of sanskritization, a stimulus to the process of sanskritization. The caste groups in lower hierarchies got wider opportunities in lower hierarchies got wider opportunities wider economic opportunities and became economically well off in course of time. Became economically well off in course of time. With economic prosperity, the caste groups claimed higher social cultural position through the process of sanskritization. Higher social cultural position through the process of sanskritization. Last man, क्या मतलब हुआ? Higher social cultural position through the process of sanskritization. This means imitating customs, cultures, ideologies, practices of higher caste. Isn't it? Right, economically well off. For example, toddy trappers बोलते, जो सोशियोलॉजी के लैंग्वेज में यूज होता है, सोशियोलॉजी में लिखते हैं सोशियोलॉजिस्ट, द टॉडी ट्रैपर. टॉडी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो लिखते हैं इसको ताड़ी बोलते हैं हिंदी में. ताड़ी, यू अंडरस्टैंड? ईस्टर्न है ना. तो ताड़ी ट्रैपर्स बेसिकली, ताड़ी ट्रैपर कास्ट benefited by, समझ लो, benefited by regulation of alcohol production during British period, because that caste group ventured into alcohol blending, not the higher caste, because higher caste considered alcohol as polluting. Isn't it? Getting a point? Right. So they ventured and they become economically well off in due course of time. पैसा आया. That money they used for buying land, purchasing land, isn't it? Invested in education of children, isn't it? Right, economic prosperity, and then they claimed higher social cultural status or position. Right, जो economic prosperity आया तो ज़्यादा empowered हो गए किस बात के लिए? Claim करने के लिए. Right, given up their unclean occupations and claimed higher position, isn't it? Education में position and all, isn't it? And this is what called sanskritization. तो यहाँ पे अपन बात करें nature and scope. Yes. हाँ 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 हाँ, claimed their status. Yes, yes, that is, yeah. इजावा में बहुत सारे caste groups pan India level पे, right? So they claimed higher status. So यहाँ पे अपन बात क्या कर रहे हैं? Nature and scope. Nature and scope. तो scope में आपने क्या लिखा कि in the beginning, according to MN Srinivas, the process of sanskritization was slow. In traditional society, the process of sanskritization was slow, but during British period, the process of sanskritization fastened because of, yes, westernization and changing economic position, economic status of the caste groups in lower hierarchies. क्योंकि जो British occupations थे, be that police, be that army, those occupations were not closed for the different caste groups. All caste groups had opportunity to enter into those new occupations, irrespective of caste, irrespective of the notions of purity and pollution, isn't it? Right. जो transport and communication facility आया, railway, tram, etc. तो in those, the practice of untouchability dilute हो गया.
right? वहां पे तो people from any caste groups who were able to buy tickets, they boarded and migrated from one place to another place. Rural areas to Kolkata, Bombay, isn't it? Train तो वैसे ही चला ना, right? And in at the place of migration, movement, जहां पे movement हुआ, there they claimed higher position by imitating the culture and lifestyle of the higher caste, isn't it? Higher caste. कोलकाता माइग्रेट किए, देखिए कि ब्राह्मण्स ईट माछ भात खाने लग गए, isn't it? Right? Followed, Brahmanical, ways and methods and claimed higher status. So fasten हो गया, स्कोप क्या हो गया? वाइडन हो गया, है ना? वाइडन हो गया ड्यूरिंग ब्रिटिश period with transport and communication facilities and movement of person from one place to another, right? एक और लिख लो sentence. Further development of transport and communication facilities and movement of persons from rural to urban centers, development of transport and communication facilities and movement of persons from rural to urban in search of occupation and employment, occupation or employment, movement of person from rural to urban in search of occupation or employment, also fastened the process of Sanskritization. Fastened the process of Sanskritization. After independence, institutional structural changes, comma, constitutional ideological changes, scientific and technological developments, educational opportunities, positive discrimination, opportunities, positive discrimination, बोले तो reservation, positive discrimination, comma, positive discrimination, comma, industrialization and urbanization, etc. Further provided new stimulus to the process of Sanskritization. New stimulus to the process of Sanskritization. Right. है ना? और आप इस बात को मान लेंगे, प्लीज, क्लास की बात है, इसको बाहर डिस्कस मत करना, है ना? इस बात को मान लोगे कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस द dominance of Sanskritic culture is well visible in imitation and acceptance by the intermediary caste groups and caste groups in lower hierarchy, with improvement in their economic, educational, cultural position over the period of time. In 1950s, lot of hue and cry, started. उस समय भी ऐसा ही हुआ था जैसा अभी दिल्ली में जो मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, गौतम, जिन्होंने बुद्धिस्ट उसमें पार्टिसिपेट किया, कितना उनको मिनिस्ट्री से भी हटा दिया, है ना? तो दीज आर सर्टेन ओकेजन्स,
These are certain occasions, hardly 1 or 2 or 3 occasions we will find after independence, right? कि नॉन सांस्कृतिक कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर की तरफ लोगों का ओरिएंटेशन एंड कन्वर्जन इन लार्ज नंबर. Otherwise, orientation has been there towards Sanskritization, right? And that is well visible. आप एक बार नजर उठा के देख लेना, particularly in northern states, कि संस्कृताइजेशन, ये जो जितना ये जो जुलूस होता है ना, या टेम्पल मूवमेंट हुआ, क्या टेम्पल मूवमेंट में ब्राह्मण्स ओनली पार्टिसिपेटेड? कल्याण सिंह जी वॉज अ ब्राह्मण or from Lodha caste, Lodhi caste, intermediate caste. Are Mauryas Brahmins and Mauryas today in large number? Getting your point or not? Right? So we have seen, these are the facts. Facts hai कि caste groups from lower hierarchies, intermediary hierarchies, with improvement in their position, right? चिराग पासवान जी का सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, आप समझ जाएंगे, राइट? मेनी सच लीडर्स, यू नो, हु हैज अटेन्ड पोजीशन, इजंट इट, फ्रॉम लोअर हायरार्कीज टू ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स सांस्कृतिक ब्राह्मणिक कल्चर, इजंट इट? द ग्रेट ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, आगे डिस्कस करूंगा. 2 ट्रेडिशन होता है इंडिया में, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन. इंडिया में नहीं होता. रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रपोज किया कॉन्सेप्ट, है ना, मैक्सिकन सोसाइटी के लिए. दैट वाज अप्लाइड बाय मैकिम मैरिट इन इंडिया, कि ग्रेट ट्रेडिशन एंड द लिटिल ट्रेडिशन. ऐसा नहीं है, लिटिल ट्रेडिशन हैज आल्सो बीन यूनिवर्सलाइज्ड टू ग्रेट, बट ग्रेट ट्रेडिशन हैज आल्सो बीन पैरोकियलाइज्ड. जो विजिबिलिटी है कि ग्रेट ट्रेडिशन हैव बीन पैरोकियलाइज्ड, इजंट इट? राइट? ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस हैव बीन पैरोकियलाइज्ड एंड लार्ज नंबर में. आप देखेंगे अभी, आप उस दिन मैं क्या था, विश्वकर्मा पूजा, तो मैं ब्रदर के आपने जा रहा, तो जब ही एक्सप्रेसवे से टर्न किया राजनगर एक्सटेंशन के लिए, इट टुक 2 hours टू रीच टू राजनगर, यू नो, जस्ट स्ट्रेच ऑफ 5 kilometers. एंड जो वो विश्वकर्मा पूजा में जो क्या बोलते हैं, वो मूर्ति विसर्जन के लिए चिल्ड्रंस, यू नो, हार्डली 10 years of age टू एडल्ट्स, है ना, all belonging to nearby slums. वो मिडिल क्लास के चिल्ड्रन नहीं थे कि जो गुटखा दारू पी रहे हैं और डांस कर रहे हैं. म्यूजिक इतना लाउड कि विद इन कार ऐसा लग रहा था कि अब ये ब्लास्ट हो जाएगा. मतलब उस दिन हार्ट का टेस्ट बिना ईसीजी का हो गया, बिना ईसीजी कराए हार्ट का टेस्ट हो गया कि हार्ट स्ट्रांग है, क्योंकि जितना लाउड म्यूजिक, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ, यू नो, वूफर्स एंड ऑल एक ट्रैक्टर पे बांध देते, है ना, और वो एक साथ पूरा वो ऐसा लाउड म्यूजिक की लगे कि बस ब्लास्ट हो गया. मतलब कई बार वो वाइब्रेट करता, व्हीकल, कार मेरा वाइब्रेट कर रहा होता. एंड इट टुक, मतलब पूरा रोड ब्लॉक, कोई मतलब नहीं. मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया जस्ट समझने के लिए कि ये भी संस्कृताइजेशन ही है. दिस इज संस्कृताइजेशन, राइट? गेटिंग योर पॉइंट कि स्लम ड्वेलिंग पॉपुलेशन पीपल आर हाईली, यू नो, राइट, obsessed without understanding actual meaning of religion, right? कोई भी अगर थोड़ा भी अगर उनको साइड से निकलने का कोशिश करता तो ऐसे डंडा उठाते. रिलीजन ने डंडा चलाना सिखाया ऐसा क्या, कि व्हीकल तोड़ दो, गाड़ी तोड़ दो, मार दो. उस क्राउड में तो अगर कोई भी वेंचर कर जाए तो फिर, राइट? बट वो जो सिचुएशन होता उससे आप समझ सकते हैं, isn't it? कि ओरिएंटेशन, सांस्कृतिक ओरिएंटेशन. लेकिन सांस्कृतिक ओरिएंटेशन में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये नहीं समझना कि सर ऐसा एग्जांपल क्यों दे रहे हैं. मैं ये कि कॉन्सियसनेस, isn't it, has trickled down. ये नहीं कहेंगे कि that सांस्कृतिक कॉन्सियसनेस has declined. सांस्कृतिक कॉन्सियसनेस, यू नो, continues, isn't it? आप ये नहीं मानेंगे कि नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब ये सब डेवलपमेंट के बाद तो प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन कहाँ है, तो नहीं, इट इज देयर. अब इसको, अब देखिए, अपन कास्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज इससे ऑफेंसिव मत लेना. मतलब इन कोर्स ऑफ टाइम, caste groups in intermediary hierarchies and lower hierarchies with improvement in their economic positions, isn't it, you will find are more oriented towards, you know, the culture,
values, norms, customs which are sanskritized in nature, right? Sanskritic culture, right? Getting your point. आप जो रूरल एरिया से आते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे, विलेजेस में, है ना, राइट ज़्यादा बेहतर समझ रहे होंगे, नीड नॉट टू, राइट। सावन में जो हरिद्वार जाने और हरिद्वार से आने का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है, एवरी ईयर द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजिंग, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ संस्कृताइजेशन, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ संस्कृताइजेशन, राइट, spread of Sanskritic culture, right? Getting your point, right? ये सब एग्जाम्पल देखो, इसको प्लीज रिलीजन से मत रिलेट करना, ये सब एग्जाम्पल जस्ट टू एक्सप्लेन एंड इजिली आपके सामने रखने के लिए प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। अब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ये मत कहना कि एक ही रिलीजन से क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज अबाउट हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये संस्कृताइजेशन का प्रोसेस किससे रिलेटेड है? जैसे मैंने कहा कि बिगिनिंग में उन्होंने क्या टर्म दिया, ब्राह्मणाइजेशन, बिगिनिंग में ब्राह्मणाइजेशन एंड लेटर ऑन ही चेंज टू संस्कृताइजेशन, राइट? गेटिंग योर पॉइंट? यस यस। सो दिस इज नेक्स्ट। सो इसको मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, राइट? एक्सेप्ट कर लेना, है ना? लास्ट पर्सन एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, है ना? अभी अच्छा, ये जो एग्जाम्पल दिया इसको किसी रिलीजन के एंगल से नहीं देखना, ये जस्ट एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको समझा सके, क्योंकि मैं भी ऑब्जर्व करता हूं ना, मैं भी सोशल पर्सन हूं, सोसाइटी में देखता हूं, इजंट इट, राइट? और कभी आपको देखना हो तो अभी जैसे कोई भी ओकेजन आता है तो जरा किसी नियर बाई एरिया में जाकर आप देख लेंगे, स्लम एरियाज में जाकर देख लेंगे, इजंट इट? आप देखें तो ये जो शिवसेना पार्टी, एनीबॉडी फ्रॉम महाराष्ट्र, जो मेजर सपोर्ट बेस है मुंबई में शिवसेना का, वो कहां से है? हायर स्ट्रेटम से है, उसमें तो शरद पवार जी भी हैं। कहां से है? राइट, संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन, दैट इज संस्कृताइजेशन। गेटिंग योर पॉइंट? दैट इज संस्कृताइजेशन, राइट? यस। हाँ हाँ हाँ, हाँ, लेकिन इमिटेट कर गए ना, दे themselves given up, themselves given up, right? Many Jaiswal, they are not alcoholics, they deal in business but not, right? Jains deal in poultry ka business but they don't eat non-veg, isn't it? So many caste groups imitated to the higher Sanskritic. Acha, this is not related only to food, drink, this is also related to dress code, lifestyle, है ना, education, isn't it, profession, right, culture, culture at large, I mean worshipping of deities, so in सब respect में हम देखते हैं ना। नहीं, पहला वाला क्वेश्चन नहीं था। किसका पहला था? MN श्रीनिवास का? नहीं, over the period of time which economic, social, educational developments, political, like Sanskritic orientation has increased, that is the point of MN Srinivas, मेरा नहीं। किसका पॉइंट है ये? MN श्रीनिवास का। मैं तो केवल एग्जांपल दे रहा हूं। MN श्रीनिवास का पॉइंट है कि आफ्टर independence, Sanskritic orientation has not declined, rather it has increased, right? So this is next ek lastly please। इतना कॉम्प्रिहेंड हुआ, डाइजेस्ट कर लो इसको, है ना, इसको डाइजेस्ट कर लो। टू बी कंटिन्यूड, है ना? ओके, प्लीज कम।